it look like it's magic. Oh yeah. 'Cause I see no. Hey guys, Assalamualaikum and welcome back to It's Ruhi Afza. So today I'm gonna show you a tutorial of my makeup as a wedding guest. So इससे पहले मैंने जो अपलोड किया था वीडियो शादी वाला व्लॉग, उसमें मैंने यही लुक क्रिएट किया है। तो हेयर स्टाइल मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप। से पहले हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने वाले हैं ताकि एक अच्छा बेस बन जाए हमारा स्मूथ सा। So it's important and I'm using this Olay moisturizing cream. Okay, so we are done with our first step and now I'm using this Nykaa Prep Up primer, and this is the new one. I'm using it for the first time. So I will start applying it on my under eyes and all over my face and blend it evenly. So basically primer help us to close the pores of skin and help the foundation to sit on your face evenly. Okay, now it's time for foundation and I'm using this Rage 4 Coverage 24-hour foundation from Sugar. So I'm gonna use this beauty blender to apply the foundation and blend it on my skin. So this foundation has really good creamy texture and not cakey at all and give you this smooth looking skin. तो हमने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया। अब हम यूज़ करेंगे ये लैक्मे का एब्सोल्यूट वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट। सो आप इसे स्पॉन्ज से भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के लिए। तो इसे हर जगह अच्छे से अप्लाई करेंगे और अपने नेक पर भी अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज एज कन्वीनियंट फॉर यू। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस primer plus matte liquid concealer from Lakme. So guys, मैंने ज़्यादा कंसीलर नहीं यूज़ किया था क्योंकि मुझे उतना ज़रूरत नहीं था, बट अगर आपके डार्क अंडर आइज़ है और आई बैग्स है तो आप यूज़ कर सकते हैं इसे डार्क स्किन को छुपाने के लिए। और ये अब मैं यूज़ करूँगी अपना मार्स का आई शेडो पैलेट। So first of all I will be applying this brown shade or reddish shade, you can say, on my outer corner and my crease and blend this thing evenly. And now I'm gonna apply this brown shade all over my lid and mix it with the nude shade. Apply the same color on your lower lashes too and blend it evenly. Now I'm gonna go for the other brown shade and blend it all over my lids, my outer V and my crease. So the next step is to apply this black color as a liner, or you can give it a smoky look and it's gonna give you a shutter look and it will turn out really beautiful. So apply the same on your lower lashes and the next step is to apply the kajal and smudge it again with the black eyeshadow. So here I'm using this
Lakme Kajal, and I'm applying it on my waterline. Now again smudge the kajal with the black and brown shade, so it will give you a smoky texture and look as well. So the next part is very interesting. I'm gonna use this shimmer from Insight and gonna apply it on my lids, my inner lids, and this will give me a glittery eyeshadow look. Okay, now it's just like a metallic and glittery look, and now I'm gonna apply this golden shimmer on my center lid. So here it is how it turned out, and now I'm gonna apply my eyeliner. So I'm using Maybelline ka eyeliner with this brush, and it has a really great matte look and texture. Okay, so this is very long lasting eyeliner gel from Maybelline, and it will give you a dramatic eye look. Okay guys, finally my eye makeup is done already, and now I'm gonna use this eyebrow pencil from Mars. और मुझे ज़्यादा कुछ आईब्रो में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थिक है. So I am using this little brown black shade, so it will give me a natural look. And the next step is to apply the mascara. So apply it very gently on your eyelashes, your upper lashes, and your lower lashes. Okay guys, finally it's done, and this is how it turned out. So the next step is to do contour, and मैं ये अपने cheeks के high points में apply करूँगी और प्रोडक्ट को अपने जॉ लाइन्स पे भी अप्लाई करूँगी and nose पर भी to define it, and lastly on your forehead, and you will be done. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा. तो अब बारी आता है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जो कि ब्लश, और मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ब्लश, और इसमें 2 शेड्स हैं जो कि बहुत ही नेचुरल एंड पीची सा लुक देता है. आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है. And apply it on my cheeks, my nose and my chin, and it will give you a natural pink look. So now I will go for my lips, and I'm using this lip liner. So I'm using this red shade. जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा ओ जालिमा. And after that हम लैक्मे का this nude shade यूज़ करेंगे जो कि लिक्विड लिपस्टिक है, और ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ही लाइट भी है एंड लाइट वेट टू कैरी ऑन योर लिप्स, एंड इट्स आल्सो मैट फिनिश. So my eye look was little bit bold and dramatic, so I'm using this
nude shade. And the next step is to apply this highlighter, and I'm using this Sugar Wala highlighter. So let's open it, and you can apply this highlighter by using it with a brush. That highlighter flat brush, but it's not too good on my face, so I'm using my finger. और आप डिफरेंस बाद में देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा आता है आप जब ब्रश से अप्लाई करते हैं या फिर अपने फिंगर से. इट गिव यू मोर शाइन एंड गुड टेक्सचर. सो हियर आई गो, एंड मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई करूँगी. अपने नोज़ को हाईलाइट करूँगी, अपने चीक्स बोन्स को, एंड यू कैन अप्लाई ऑन योर brow bone. So you can apply it all over your face where the light will affect. You already know about it, and this is how it turned out. So pretty. Guys, so now I'm ready और मैं तैयार हो चुकी हूँ शादी में जाने के लिए. तब तक आप वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें. बाय.